Yes, students, welcome back to the class. So today, 25th January, we are going to start triple column cash book. Okay, for those who have already done with the syllabus, for you all, it will be a revision. So we'll be dealing with the Telangana State Board of Intermediate Education. We'll be following the textbook Telugu Academy. In that 5th chapter, we are going to do cash book. So 12th problem we are going to do for this particular day. Okay. So 12th problem from Telugu Academy textbook. I'll just read out the transactions. Prepare the triple column cash book for the following transactions. Okay. You will be given particular transactions. You have to record in you as per the triple column cash book. Okay. We all know that it's a ledger account. We have debit and credit side. Okay, we have triple column, means 3 columns will be there. Discount allowed, in debit side discount allowed, cash and bank. In credit it will be discount received, cash and bank. Okay, I hope everyone is clear with this. And those who are listening me online, can you hear? Am I audible, clear? Yes. So we have this problem starting with first transaction. We says date is given 2019 March 1st. We have two balances. Okay, what are there? Cash in hand, we have 4,900, and we also have balance in our bank, that is cash at bank 5,000. Okay, cash in hand, how much we have on the 1st March 2019? We have 4,900 as cash in hand. That means these two balances we have in our account. Okay. As per the date 2019 March 1st, how much is balances we have? We all know that debit balances start with 2 and credit balances start with by, right? Okay, this is the rule. So balances, how much we have? Balance B by D. What is B by D, children? B by D is brought down. So yes. So how much cash we have in our hand? 4,900, and cash is there in our bank. How much cash is balance is there in our bank? Yes, 5,000. Okay, 5,000 is there in our bank. So as per this, we will record. We will do all the. We will see that how much incomes we are receiving, and from that how much expenditures we are doing. Okay, the credit side we will record all the transactions which are all our expenses. So expenses are recorded in our credit side. Now whatever we receive income, we receive commissions. Okay, whatever we receive, if we do the sales, जो भी आप सेल करेंगे, जो भी आपको नगद पैसे आएंगे, that will be recorded in debit side. Okay, so receives, this arrow mark is just for explanation. Okay, what is this arrow mark shows? This shows that it is coming in. Whatever it is coming, as per the firm, we will understand this particular problem as it's our firm. Okay, we will just consider it as ABM firm. Okay, so as per this firm, whatever is coming inside our business, will record in our debit side. Okay, and whatever is there in our expenses, we will record in on the credit side. Okay, just one second. Okay, can you hear? Can you see this? Okay, so debit balances is all your incomes, credit balances all your expenses, which is going out of your firm, ABM firm, right? Chaliye. What are the transactions? On March 3rd, the transaction is given as deposited cash. Okay, before we start our problem, we will see what is contra entry. The very most important in this problem is contra entry. We have two scenarios for contra entry. One is cash deposited into bank. The second one is cash withdrawn from bank. आप cash लेके जाके बैंक में उसको deposit करना, वो भी contra entry कहला जाएगी. Cash बैंक से यानी ATM से आप उसको withdraw कर रहे, वो भी contra entry कहलाई जाएगी. ठीक है? Only two scenarios. One is cash deposited into bank. अदर इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये दो ट्रांजैक्शंस आपको अगर आ गए तो इससे क्लियर है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है. ठीक हो गया? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक.
Other than that, there will be no counter entry. If it is like Raju received a check and deposited on the same day, then it will be not considered as counter entry. Raju ने receive किया check, ठीक है, वो उसी दिन ले आके deposit कर दिया. So that will be not considered as counter entry. What all will be considered? Only two transactions. Cash या तो आप deposit कर रहे, ठीक है, या तो आप उसको withdraw कर रहे यानी निकाल रहे. बैंक आपके ही बैंक अकाउंट में जैसा 5000 है, we have 5000 in our bank balance, right? इसमें से अगर आप पैसे निकाल रहे, if you are withdrawing, that is as contra entry. Okay, it will be written in two sides. It will be recorded in debit side and it will be recorded in the credit side. If it is starting with to cash, तो आपको बैंक कॉलम में लिखना है, और बाय बैंक से अगर स्टार्ट हो रहा तो आपको कैश कॉलम में लिखना है. ठीक हो गया? So the second transaction on 3rd March is what? 3rd March 2019 is cash deposited into bank. Okay, cash deposited into bank. What is that contra entry? It is there, right? Cash deposited into bank. How much is the amount? Cash deposited into bank is 3000, right? 3000. Yes. So it will start with cash account. In LF you will write C. As you all know, what is the pro forma of triple column cash book? As you can clearly see, it's date particulars, LF, discount allowed, cash and bank, date particulars, LF is ledger folio, discount received and cash. So your debit side, you are recording all the transaction which is received. So contra entry, cash deposited into bank is to cash, and in LF we will represent this as C. C is contra, where whenever it is written as cash, ठीक है, जब कैश होगा तो आप उसको कैश के अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे. क्लियर? Contra entry will be recorded two sides. We have recorded on the debit side. Okay, cash is coming inside our this thing firm. So to cash account contra entry will write in the bank column, right? जहां पे कैश लिखेंगे तो उसको बैंक में रिकॉर्ड करेंगे. और March 3rd 2019 by bank. So cash deposited into bank starts with to cash, ends with by bank. By bank account, how much we will write the contra? Okay, when it is written bank, we will not write in the bank column, instead we will write in the cash column. So this particular transaction which is contra will write on the two sides. Cash deposited into bank will write in the debit side as well as on the credit side. It starts with to cash, ends with by bank. जब आप to cash बोल रहे तो आप बैंक कॉलम में लिखिए, और जब by बैंक बोल रहे तो उसको कैश कॉलम में लिखिए. क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, what is the next transactions? We have done sales. On 6th of January we have done sales. So when we are doing sales, we are receiving it, right? When you are receiving it, debit what comes in, as per the real rule, debit what comes in, we are receiving it. That's the reason we are writing on the debit side. So to sales हमने किया और हमको पैसे आए. जब तक अगर बोला नहीं कि पैसे हमने सेल किया और पैसे चेक के जरिए आए, तो we will not write in the until that we will not write in the bank column. But if it is just given as sale किया और पैसे आए, तो we will assume it that we have received it in cash. तो जब पैसे आए हमारे पास, तो क्या इंक्रीज होगा? हमारी जो कैश इन हैंड था, जो 4900 था, वो अब इंक्रीज होगा. कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गया? 9800, राइट? 9800 इज द सेल्स. ओके, सो हमको रिसीव हुआ, हमने सेल किया, तो हमारे पास पैसे आए. ठीक है, तो पैसे किस मकसद से आए? सेल करने पर आए. तो टू सेल्स, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया. दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग इन द कैश कॉलम 9800. ओके, कैश कॉलम हैज बीन इंक्रीज. क्लियर यहां तक? इट्स a received, or this is a receipts. Credit side is payments. Okay, all the payables on the credit side, all the receivables on the debit side. As we have done sales, we are receiving that particular amount, and unless it is not mentioned that we have done sales and received through check, okay, till then we'll assume it as cash only. जहां पे अगर खाली sales लिखा गया तो हम जो है उसको सिर्फ कैश में लिख देंगे. ठीक है,
चलिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रेडी 2500. यहां पर गौर करिए, इट्स वेरी ट्रिकी एंड यू हैव टू रिमेंबर हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड दिस. ओके, नाउ वी एज एबीएम फर्म वी हैव रिसीव्ड ए चेक. रेडी से, रेडी हमारा क्लाइंट है, ठीक है, हमको उसके से पैसे आना था एंड ही हैज गिवन द चेक. ओके, कितने अमाउंट का था? 2500 का चेक दे दिया. वी हैव रिसीव्ड द चेक, बट ABM firm, as ABM firm, on the same day we have not gone and we have not deposited that particular check. याद रखिए, हम सिर्फ चेक रिसीव करें, ठीक है, और उसी दिन लग जाकर बैंक में डिपॉजिट नहीं करें. ये होता क्यों? सी, वी हैव डिफरेंट बैंक, अपना जितने भी क्लाइंट्स है उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है. हर बार बैंक जो है आपके नजदीक होना जरूरी नहीं है, ठीक है. और ये भी जो भी डिपॉजिट करने जा रहे हैं चेक को, तो वो भी यही सोचते हैं कि भाई इकट्ठा जो है 3-4 चेक लग जाकर आप डिपॉजिट करें. तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट whenever you receive a check on the same day you go and deposit. Okay, so sometimes it is being deposited on the next day or the following days. After 3-4 days also we can go and deposit that particular check. So how we have to record this particular transaction which is not deposit on the same day. सिर्फ हमको चेक रिसीव कर लिया गया, हम I or ready has given the check. So we have just received that particular check on March 10th. We have received this particular check, okay, from ready, okay, ready account. So we will just note it down in our cash. हम सिर्फ क्या करेंगे, उस दिन तो ट्रांजैक्शन तो पास करना है, जिस दिन चेक लाकर रेडी दिया है उस दिन तो हम कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करके रखेंगे. अदरवाइज इफ वी फॉरगेट देन इट विल बी अनदर प्रॉब्लम, दैट इट विल हैव देन एरर्स भी हो सकते, ओमिशन कमीशन के जो भी एरर्स होना है वो हो सकते, ठीक है, मिस हो जा सकती है ट्रांजैक्शन. तो जिस दिन रवि ने लाकर हमको चेक दिया उसको हम कैश के तौर पर लिख कर रख ले रहे खाली, और ये कैश की ट्रांजैक्शन को नलीफाई करने के लिए हम बैंक में उसको काउंटर एंट्री पास करेंगे, वो कैश को हम ले आके डिपॉजिट कर देंगे. जैसा कैश ले आके हम डिपॉजिट करते हैं, जो भी वो डेट में डिपॉजिट होगा वो डेट को हम काउंटर एंट्री करार दिए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज कैश इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन दैट पर्टिकुलर बैंक. सो जिस दिन हम रेडी से चेक लिए हैं उस दिन हम ले आके डिपॉजिट करें, तो उस दिन हम सिर्फ एज्यूम कर लेंगे कि भाई हमारे पैसे हम कैश के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, कैश मिल गया भाई बोल के रिकॉर्ड कर दिया. एज ऑफ दैट वी हैव नॉट एक्चुअली रिसीव द कैश, वी हैव ओनली रिसीव द चेक. In order to pass that journal entry, in order to pass that particular transaction, we are recording it as cash. Although एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं किए, हम ये 25,000 कैश रिसीव नहीं किए, इसको हम बाद में एक एंट्री पास करके उसको नलीफाई करते हैं और काउंटर एंट्री पास कर जो है दैट वी विल डू जब वो चेक, ये अमाउंट का जब डिपॉजिट होगा जब भी हम उसको नलीफाई करेंगे, ठीक है. एज ऑफ नाउ यू जस्ट थिंक दैट वी हैव रिसीव ए चेक अमाउंटिंग ऑफ 2500 from ready and we will write it as cashier. Clear? इतना ही करना है आपको अभी. When this particular check is getting deposited, then we will do it. Okay. The next transaction is commission received. On 14th of March, we have received commission. So if we are receiving, what are the receivables? Receivables are all on the debit side. So what you are receiving? You are receiving commission. Commission amount. ठीक है, कमीशन अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड? वी हैव रिसीव्ड 500. एज आई हैव टोल्ड यू, इफ इट इज नॉट मेंशन, चेक की अगर बात नहीं हुई तो आपको बैंक अकाउंट में, बैंक के कॉलम में लिखना नहीं है. अगर बात सिर्फ अमाउंट की चली रिसीव करे या पे करे तो वो हम रिसीव करेंगे कैश के फॉर्म में और पे करेंगे कैश के फॉर्म में. तो कमीशन को हम कमीशन रिसीव करें और वो कैश के फॉर्म में हम रिसीव करें और हमारा कैश का कॉलम इंक्रीज हो गया और हम कैश के कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 16th of March, पेड टू वंशी, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव. यहां पे तो डिस्काउंट रिसीव बोल दिया, राइट? क्लियरली इट इज बीन सेड दैट डिस्काउंट इज रिसीव्ड. वंशी से हमको क्या करना था? पे करना था. एज एबीएम फर्म, एज वी आर एबीएम फर्म नाउ, we have to pay a certain amount to वंशी. कितना पे करना था वंशी को? सी 2000 पे करने का था, बट आउट ऑफ विच वी हैव गॉट, ठीक है, रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड 400 रुपीज एज डिस्काउंट.
ओके तो एक्चुअल कैश कितना हमने पे किया, कैश which we paid and cash which got reduced is only 1600. Okay, clear? So the payment side, all the payables on the credit side, we as an ABM firm, we are paying this particular amount on March 16th. So all the credit starts with buy, right? Buy Vamshi account. By Vamshi account, how much is the amount? Yes, as you can see, discount received is there column. Discount received में तो discount received का लिखेंगे 1400 and 1600 we have paid. पे कितना करना था उसको, वंशी को हम 2000 पे करना था, वंशी ने हमको डिस्काउंट दिया 400 का, तो ओनली 1600 वी आर पेइंग. 1600 कहां से पे कर रहे, कैश में से पे कर रहे, सो कैश में से अमाउंट कम होगा. ओके, एंड द रिसीव वी हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट फ्रॉम वंशी. 400 रुपए हमको डिस्काउंट मिला वंशी की तरफ से. वंशी हमारे जो भी हमारा सप्लायर है उसके से हमको डिस्काउंट मिला, तो 400 वी हैव रिसीव्ड डिस्काउंट, राइट? सो वी विल राइट इन द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम 400. इन कैश वी विल राइट 1600. Many of you will do the transaction correctly, but mistakenly जो है ना, जल्दी जल्दी में आप उसको बैंक के कॉलम में रख देते, hence you will get differences in your balances and आपका प्रॉब्लम वहां पर रॉन्ग आ जाता है, वहां पे आपका carried down amount will be incorrect. So make sure when you are writing the transactions, cash है तो कैश के कॉलम में लिखना है, बैंक है तो बैंक के कॉलम में लिखना है. If it is related to any payment or receipt related to check और बैंक की बात हो रही तो ही उसमें आपको बैंक कॉलम में लिखना है, राइट? चलिए, रेडीज चेक पेड इनटू बैंक. ठीक है, ये जो रेडी का चेक 10th ऑफ मार्च का था, अब वो चेक जो है 18th ऑफ मार्च को जो है डिपॉजिट कर दिए. यानी 18th ऑफ मार्च में एबीएम फर्म को 4-5 चेक्स आ गए, तो अब वो अपनी एक ही ट्रिप में 4-5 चेक्स को जो है एक साथ डिपॉजिट कर दे रहे. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर चेक विच वी हैव रिकॉर्डेड एज कैश हियर, दिस चेक finally on 18th that particular check has been deposited into bank. So वो जो कैश के तौर पर हम लिखे थे उसको हम ले आके डिपॉजिट कर दे रहे. ठीक है, on 18th of March, 18th of March जिस तरह हम कैश लेके उसको एंटर कर दिए थे हमारे, और वो कैश अमाउंट को, वो चेक को नलिफाई करने के लिए, दैट अमाउंट को जो है उसको कैंसिल करने के लिए हम पास करेंगे जर्नल उसका ट्रांजैक्शन, और वो भी हो जाएगा हमारा contra entry. That particular cash will be deposited into bank, so it will be contra entry. How much we will write the contra entry? 2500. This particular 2500 actually वो डिपॉजिट होना था, और वो कैश के फॉर्म में लिख के ये कैश को हम लेकर फाइनली डिपॉजिट कर दिए. तो जब डिपॉजिट कर रहे, when cash is getting deposited, it will start with to cash and end with by bank. By bank account March 18th, contra in cash we will write 2500. Clear? 2500 and cash, to cash 2500 in the bank column, by bank in the cash column 2500. Clear होगा रेडी का चेक? चलिए, now we have done one expenditure on March 20th. मार्च 20th के दिन क्या हुआ? वी हैव पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच वाज दैट? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कितना पे किए? 600 रुपीज पे किए. ओके, तो 600 हमारे कैश में से गए हैं, 600 इज गॉन. सो ऑल द पेएबल्स ऑन द क्रेडिट साइड. दैट्स द रीजन ऑन 28th March वी हैव डन द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर. ऑन 22 रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीकांत एंड डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड बोल के भी बोल रहा, और हमको रिसीव किया, एबीएम फर्म हैज रिसीव्ड फ्रॉम श्रीकांत. सो मार्च 22nd टू श्रीकांत account we have allowed. See, we were expecting some amount from Shrikant, our client, and what was the amount to be expected? It was expected 5000 हमको श्रीकांत से आने का था, बट
he has paid only 4,700, right? So when he has paid 4,700, because we have said okay 300 is allowed to you, ठीक है, you have paid it on time, so you are a old customer or also you are an old client, so what we will do, we will give you 300 as discount. So हमने श्रीकांत को discount allow किया. So how much is that amount? 300 is discount allowed. We have allowed as ABM firm, we have allowed discount. ठीक है, तो discount will be written on the discount allowed column. And how much is that cash we received? Only 4,700 received. Rather we would have received, we should have received 5,000. Instead we received only 4,700 from Shrikant. The rest amount, balance amount is discount allowed. हमने अलाउ कर दिया, हम 5,000 नहीं रिसीव करे, सिर्फ 4,700 रिसीव करे. ठीक हो गया यहां तक? डिस्काउंट अलाउड बोला तो डिस्काउंट अलाउड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव बोला तो डिस्काउंट रिसीव में आएगा, राइट? क्लियर? चलिए, पेड टू श्याम. यस, no, before that on 24th there is another contra entry. Cash withdrawn from bank for office use. कैश विड्रॉ कर रहे हो या कैश लेके उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ये दो कॉन्ट्रा एंट्रीज है. पहली कॉन्ट्रा एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश लेगा के बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो कॉन्ट्रा एंट्री आ गई. टू कैश से बाय बैंक तक. और कैश को हम विड्रॉ करें, एटीएम से गए, हमारे पास बैंक में बैलेंस था, हमको जरूरत पड़ गई और हम विड्रॉ कर लिए, तो ये जो कैश हम विड्रॉ करेंगे बैंक में से, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी. ये स्टार्ट होगी टू बैंक से, एंड होगी बाय कैश पर. जब टू बैंक से शुरू होगी तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे, और बाय बैंक जब बाय कैश जो हम बोलेंगे तो हम उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. तो द सेकेंड सिनेरियो, द सेकेंड केस इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. Okay, cash deposited into bank on March 24th to bank account contra cash column. How much is the amount? 2,000. Okay, cash withdrawn from, कैश जो हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, कहां से विड्रॉ करेंगे? बैंक से विड्रॉ करें. ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे उसको कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में. सेम चीज कॉन्ट्रा एंट्री है ऑन मार्च 24th बाय कैश. जब कैश विड्रॉ होगा बैंक से तो टू बैंक से शुरू होगा, कैश में लिखेंगे, और बाय कैश से शुरू एंड होगा और हम उसको बैंक में लिखेंगे. बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 2,000 इन बैंक कॉलम. चलिए, उसके बाद क्या हो गया? 27th पेड टू श्याम, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है, हमने पेमेंट की, पेएबल्स आर ऑन द क्रेडिट साइड. एबीएम फर्म हैज पेड ऑन मार्च 27th by, we have done payment to Sham account. We have done payment. How much we have received the discount? We have received discount as 100, and yes, and we have received how much cash? 2,000 cash. ठीक है, 2,000 कैश वी हैव रिसीव्ड, और यानी टोटल हमको पे करना था शाम को 2,100. 2,100 की जगह हमको 100 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, तो हम एक्चुअल में हमारे पैसे सिर्फ कितने गए? एबीएम फर्म के पैसे कितने गए? सिर्फ 2,000 रुपए गए. वी हैव पेड इट. 100 रुपीज वी हैव रिसीव्ड एज डिस्काउंट. हमको फायदा हुआ यहां पर. ठीक हो गया. परचेज स्टेशनरी एंड पेड थ्रू डेबिट कार्ड. ऑन 31st March we have purchased a particular stationery. ठीक है, आप पेन, मार्कर, स्टेशनरी, सारी चीजें हो सकती. ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी पेपर्स. ठीक है, वो स्टेशनरी आप परचेज करें ऑफ वर्थ ₹1,200. कितना है स्टेशनरी का अमाउंट? कितना है? 1,200. ओके, बाय स्टेशनरी आप परचेज करें ना भाई, तो खर्चा हुआ हमारा. वी हैव डन एक्सपेंडिचर, वी आर डूइंग, वी हैव टू पे इट. ओके, स्टेशनरी हमने परचेज किया, कितने की? 1,200 की स्टेशनरी अकाउंट. बट ये जो 1,200 है, क्या हम हमारे जेब से कैश देकर लिए या स्वाइप करके डेबिट कार्ड यूज किए?
yes, we have used our debit card. So जेब से पैसे नहीं जाएंगे, बैंक से पैसे जाएंगे. So bank column will be, it will be reduced from the bank balance. Yes, bank column. 1200 from your bank column it is been reduced. यहां पे क्लियर होगा इतनी बात. ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं. ओके, सिंपल, विल डू वन सेकेंड रिविजन. सारे रिसीवेबल्स आपके डेबिट साइड पे आएंगे. सारे आप जो पे कर रहे दैट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड. इफ इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ कैश तो आपका कैश बढ़ जाएगा, तो आप कैश कॉलम में लिखेंगे. अगर आपके बैंक में आ रहे तो आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे, तो बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा. अगर आप पे कर रहे, आपका पेएबल्स पूरा क्रेडिट साइड आप पे कर रहे, कैश से पे कर रहे, तो कैश का कॉलम कम होते जाएगा, तो आप कैश के कॉलम में लिखेंगे. और बैंक से अगर जा रहा है तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि वो बैंक के कॉलम से कम हो रहा. तो एज ऑफ दैट 31 मार्च के दिन क्या हुआ, स्टेशनरी वी हैव पेड, और हमारे बैंक में से पे करे, वी हैव यूज अवर डेबिट कार्ड, उसमें से पैसे गए, तो दैट्स द रीजन वी हैव रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम. इसलिए 1200 रुपीज वी हैव रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, और बैंक से 1200 रुपए कम हुए हैं. वी विल, व्हाट विल डू नाउ, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. We have to make sure that only 2 transactions will be as contra entry. The first one is cash deposited into bank. Cash हम समझे कि भाई okay, it is not safe to keep it us. We will go and deposit in our bank. So cash जो लेगा कि deposit कर रहे हैं आप, वो एक contra entry हो गया. अब जब एक बार deposit कर दिए तो following day में जो भी firm है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई. ठीक है, that much enough cash was not there in hand. So he or she, that particular firm owner has to do, किसको भी जो है वो फर्म से, जो जिसका अकाउंट बैंक में है, वो बैंक से आपको विड्रॉ करना है. तो पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप एटीएम गए या बैंक गए, आप उसको कैश को विड्रॉ कर लिए. तो दूसरा सिनेरियो आपका कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री. सो वन इज ऑन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अदर इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ठीक हो गया. चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट है ट्रिपल कॉलम करने के लिए. रिमेंबर दिस 10 मार्क्स इन योर सिलेबस. 10 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स, फाइनल एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछा जाएगा. अदर द बिग प्रॉब्लम इज फाइनल अकाउंट फॉर 20 मार्क्स, एंड हाईएस्ट मार्क्स आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, विच विल बी गिवन फॉर 10 मार्क्स. ओके, फॉर दिस यू हैव चॉइस. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको चॉइस में है. ओके, रिमेंबर फॉर द ईयर, एकेडमिक ईयर 2022 के जो एग्जाम्स होंगे, आपको 50% चॉइस के साथ कॉमर्स का पेपर रहेगा. इवन एज फॉर कॉमर्स थ्योरी में भी 50% आपको व्हाट यू से चॉइस रहेगा, और अकाउंटेंसी में भी 50% चॉइस रहेगा. व्हाट इज 50% चॉइस? इफ यू आर गिवन 4 LAQs, you are asked to write only 2. If you are given 8 SAQs, you are asked to write only 4. Clear with this? 50% choice रहेगा. So for this particular triple column cash book, you will be having one question theory, otherwise you will be having one bank reconciliation statement problem and also triple column cash book problem. Out of these 3 you have to do only 1. Each carries 10 marks. Any that particular one problem which you do, which you attempt, either bank reconciliation statement BRS or triple column cash book on the other hand, it will be for 10 marks. I hope I am clear with this. Now what we have to do, we have to simply tally this particular, we have to do the balancing of this debit side and credit side. Before we balance bank column and cash column, what we have to do, we have to consider the discount allowed and discount received. Simply for discount allowed and discount received, we should not balance, we have to just write the totals. अब यहाँ पे discount allowed का total कितना है? 300 है. चलिए, जितने टोटल कुल मिला के डिस्काउंट अलाउड का एक ही है, तो एक ट्रांजैक्शन हम लिखे उसको क्लोज कर दिए. वी विल गो पैरेलली, आपको एक ही लाइन में उसको मारना है. जब आप क्लोज कर रहे हैं, शुड बी पैरेलल टू द सेम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल. ओके, इस तरह. एंड यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स बिकॉज यू आर क्लोजिंग दिस अकाउंट. एज पर द रूल 2 लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ. द रिसीव्स, व्हाट आर द डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव क्या क्या है? एक है 400, एक दूसरा है 100. ओके, द सम ऑफ दिस 2 डिस्काउंट रिसीव्ड इज 500. चलिए, डिस्काउंट पहले आपको सबसे पहले बैलेंसिंग करने के टाइम पे क्या करना होगा? डिस्काउंट अलाउड का कितना है, डिस्काउंट रिसीव का कितना है, उतना आपको रिकॉर्ड करना है. अब आपको डेबिट कैश को क्रेडिट के कैश से माइनस करना होगा.
ओके, इन ऑर्डर टू गेट सी बाई डी, यानी आपको कैरी डाउन अगर करना है, देखना है कि आपको कहां पर कमी पेशी हो रही, क्योंकि आपको कैश का कॉलम आपके रिसीव्स और आपके पेमेंट्स को इक्वल करना है। तो कैश का कॉलम आपको कभी भी क्या होगा, 99% जो है 90% मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेबिट कॉलम ही आपके डेबिट साइड के कॉलम्स आपके ज्यादा रहते व्हेन कंपेयर टू द क्रेडिट साइड। इट शुड बी लाइक दैट ओनली, राइट। आपके इनकम्स कभी भी ज्यादा होनी चाहिए, आपके एक्सपेंडिचर्स कम होनी चाहिए, तभी तो आपको प्रॉफिट आएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑल्सो द सेम थिंग, you can see these all figures. What is 4000? How much is 4900 plus 9800 plus 2500 plus 500 plus 4700 plus 2000? The total of cash column of debit is how much? 24,000. Yes, very good. 24,400. So in order to make this equal, every debit should have a corresponding credit. Debit should be equal to credit, right? All the expenses and receipts, all the payment should be equal. So this particular cash, is it same with this credit side cash? No, because we have all less amounts, 3,000, 1,000, 4,600 plus 6,000, 5,100 plus 600 plus 2,000. Okay, how much is the total of credit cash? जो कैश का कॉलम है क्रेडिट साइड का, बताइए कितना है टोटल उसका? 9,000. Yes, 9,700 is the total. So 9,700 डेबिट का टोटल कितना है? 24,400. क्रेडिट का टोटल कितना है? 9,700. ठीक है, तो आपको कितने की कमी पेशी होगी? सी बाई डी कितना आएगा आपको? 23,704. यस, 14,700. तो 14,700 की कमी पेशी हो गई। यहां पे मैं 14,700 डालने से क्या ये अभी इक्वल हो जाएगा? डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, यस और नो? ऑन yes, when we will do these balances, we will do these balances on the last date of the month, that is 31st March, by balance carried down. C by D is carried down. How much we are carrying down? 14,700. So now once we have written 14,700 in the credit side of the cash column, now if we do all the sum of all these numbers, these amounts, the total figure will be how much? 24,400. सेम वे आपको बैंक के कॉलम से करना है, बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट साइड का बैंक, डेबिट बैंक बैलेंसेस का टोटल माइनस करो क्रेडिट के बैंक बैलेंसेस से, आपको आपका पास आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ द बैंक कॉलम। टोटल अभी कितने हैं यहां पे देखिए, डेबिट साइड का बैंक बैलेंस कितना है? 5, 8, 2, 10, 10,500 है। यस यस स्टूडेंट्स, करेक्ट, 10,500 है। अब यहां पर देखने से दिख रहा कि कितना है? 3,200. 2,000 प्लस 1,200 इज 3,200. ओके, सो कितने की कमी पेशी हो रही है वहां पर? कितने का अमाउंट कम हो रहा? यस, इफ यू डू दैट, हाउ मच अमाउंट इज दैट? 7,300, isn't it? Yeah, so when you see this particular credit side bank column, now क्या अभी ये 10,500 हो जाएगा अभी? After writing 7,300 plus 1,200 is 8,500 plus 2,000, 10,500. चलिए 10,500. अभी यहां पर हमारा प्रॉब्लम एंड हो गया? नो, वी हैव एंडेड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये मंथ का जो है कंप्लीट हो गया. वी हैव गॉट द कैरिड डाउन. After 31st March, we have to shift the balances to the next month first day. Okay, first date, what is that after 31st March? What date comes? April? Yes, so on 1st April, we have to bring these balances which is carried down, we have to brought down. We have to bring these balances to balance brought down. How much is that amount? Cash का कितना है? 14,700 हमारे पास कैश है और बैंक का बैलेंस कितना है? 7,300. With this we will conclude our class. I hope you all understood.
it will be recorded inshallah. You have to see, okay, twice आप देखिए, उसको समझने आ जाएगा. Simple है. All the receipts you have to record on the debit side. All the payments which you are doing, you have to record on the credit side. ठीक है, contra entry का practice करिए. Unless you practice, you won't be able to get perfection. Practice makes perfect. ठीक है, जितना हो सका contra entry practice करते जाइए, and we'll do the further problems in the next classes. Okay. Those who are taking my online classes, they can take the screenshot out of this, and we will send the link also. Any other doubts? Yeah. So make sure you attempt this particular problem, and you will get, if you do in this particular way, 10 on 10 inshallah you will score for this. 10 mark ka problem hai, and 10 on 10 you will score for this particular problem. Triple column cash book. Very simple, very easy. Only practice what is contra entry. Don't forget to write contra in your LF. लिखना ज़रूरी है. If you don't write, marks will be deducted. Debit side, credit side, and this is how you have to do it. Okay, C by D convert to B by D. Clear? Clear, students? चलिए. Okay, we'll try to meet in the next class. We'll continue from the on time inshallah. So we'll be continuing our class tomorrow. Okay, and further any changes and further details you will be updated. Okay. Okay, bye students. Allah Hafiz.